The audience students praise the follow. Vessel potential is conducted to ventricular side of AVN and AV bundle from where the bundle is transmitted. The ventricle contact the wall of the cerebral muscle to contact the artery undergoes relaxation diastole coinciding with the ventricular systole increasing the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid. Due to attempt black hole as the ventricular pressure increased further the signs regarding the pulmonary artery and the aorta are forced open, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway. The ventricle now relax ventricular diastole and the ventricular pressure, hence causing the closures of semicular valves which prevent the black flow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by pressure in the artery exerted by the blood which was being impeted into them by the veins. The blood now once again moves freely to the ventricle. The ventricle and the artery are now again in a relaxed joint diastole state. SAN generate a new action potential and the event described above the repeated in that sequence and the process continues. The sequencing event in the heart, which is cyclically repeated, is called the cardiac cycle. The sequential event in the heart, which is ventricular cyclic repeated, is called the cardiac cycle, and it consists of systole and diastole of both the artery and ventricles. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. Heart beat 72 times per minute. That mainly cardiac cycle is 0.8 सेकंड. Cardiac cycle का ड्यूरेशन कितना होता है 0.8 सेकंड. During the cardiac cycle, each ventricle pump out approximately 70 ml of blood, which is called the stroke volume. The stroke volume the stroke volume multiplied by the heart rate, number of beats per minute gives the cardiac output. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped. Cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricular 500 ml. Cardiac output, the cardiac output defined as the volume of blood. Volume of blood, volume of blood is equal to 5,000 ml or 5 liter in healthy individual. The body has the ability to alter the stroke volume as well as heart rate. Here with the cardiac output. For example, the cardiac output in an athlete much higher than the normal. Cardiac output cardiac output of an athlete which will be much higher than that of ordinary man. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through a stethoscope. The first sound LUB. The first sound LUB is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valves, where the second heart sound DUB is associated with the closure of, closure of the semilunar valve. These sounds are of clinical diagnostic significance. Electrocardiac, electrocardiac, electrocardiograph, ECG,
Each peak in the ECG is defined with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart. The P wave represents the electrical excitation or depolarization of the artery, which lead to the contraction of the both the artery. The QRS complex represents the depolarization of ventricles, which initiated the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q remarks the beginning of the systole. The T wave represents the return. The T wave represent the return of the ventricular form to excited to normal state, repolarization. The end of T wave marks the end of systole. The end of the T wave marks the end of the systole. Obviously, counting the number of QRX complexes that occur in given time period. The number of QRS complexes that occur in given time period. One can determine the heart rate of an individual और उनमें से एक क्या बताता है हार्ट बीट रेट बताता है एक इंडिविजुअल का since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape of a region lead configuration. Any deviation from this shape indicates a possible abnormality or damage. Hence, it is great clinical significance. Double circulation. As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on the lungs, from where the oxygenated blood is carried out by the pulmonary vein into the left artery. This pathway consists of polymeric circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried out by a network of arteries, arterioles, and capillaries to the tissue from where the deoxygenated blood is collected by a system of balloons, vein and vena cava, and imparted into the right entry. और कहाँ चला जाता है वेना केवा से होते हुए राइट एंट्रियम में चला जाता है ठीक है दिस इज सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन ये कैसा सर्कुलेशन है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन The systematic circulation provides nutrients O2 and other essential substances to the tissue and take CO2, another harmful substance away for elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system. The hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver before it is delivered to the systematic circulation. A speed coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac muscles. Pulmonary artery, lungs, pulmonary artery से पहले किधर जाएगा pulmonary vein में ना artery से vein, vein से फिर artery. Pulmonary artery से lungs, lungs से pulmonary vein, फिर vein से dorsal aorta, फिर dorsal aorta से इधर body part से वेना केवा और वेना केवा से राइट एंट्रियम से पॉलीमेंट्री वेन फिर लंग्स लंग्स से शुरुआत होगा और लंग्स पे आके अंत होगा लंग्स से पॉलीमेरी वेन पीवी से डॉर्सल एओर्टा से बॉडी पार्ट से वेना केवा और वेना केवा से पॉलीमेट्री आर्टरी और पॉलीमेरी आर्टरी से लंग्स लंग्स पॉलीमेट्री वेन डॉर्सल एओर्टा वेना केवा systematic that is a schematic plan of blood circulation movement regulation of cardiac activity normal activity of the heart are regulated instinctively that is auto-regulated by a specialized muscle nodal tissue hence the heart is called myogenic myogenic a special neural center in medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nerve system ANS. ANS से जुड़ा होगा और neural signal through the systematic part of ANS increase the rate of heartbeat. ANS का काम क्या है? Increase the heartbeat. ANS का काम increase the heartbeat. Increase the heart. The strength of ventricular contraction and there with the cardiac output. Parasympathetic neural signal, another component of ANS, decrease the rate of heartbeat.
और एएनएस अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस जिसका न्यूरल सिग्नल में उसका काम क्या है? रेट डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर विद द कार्डियक आउट adrenal medullary hormones can also increase the cardiac output. High blood pressure, hypertension. Hypertension is a term of for blood pressure that is higher than normal frequency 120 by 80. 120 by 80. In this measure of 120 mmHg, millimeter of mercury pressure, milliliter of mercury pressure is systolic or pumping pressure and 80 mmHg diastolic or resting pressure. If repeated check of blood pressure of an individual is 140 by 90, 140 by 19, that is hypertension or higher. It show hypertension, high blood pressure lead to heart disease. हाई ब्लड प्रेशर क्या काम क्या है? हार्ट डिजीज को लीड करना और अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी. हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है? हार्ट डिजीज भी करता है और वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट करता है. Second, coronary artery disease (CAD). Coronary artery disease, often referred to as atherosclerosis, atherosclerosis, affect the vessel that supply blood to the heart muscle. CAD का काम क्या है? Supply blood to the heart muscle. It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol, and fibers tissue, which make the lumen of arteries narrower. एंजीनिया का काम सबसे इम्पोर्टेंट. एंजीनिया का काम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजीनिया पेक्टोरिसिस. इसका नाम है एंजीनिया एंजीना पेक्टोरिस ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन. सिम्टम्स क्या है इसका? इसका सिस्टम है एक्यूट चेस्ट पेन. चेस्ट पेन कोई चीज में होगा तो वो एंजीना में होगा. Appears when no enough oxygen is reaching to the heart muscle. Angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle-aged and elderly. It occurs due to the condition that affect the blood flow. Heart failure क्यों हो जाता है? Heart failure means the state of heart. Heart failure means a state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of body. जब इट इज नॉट पंपिंग ब्लड, यानी कि वो पंपिंग ब्लड नहीं करेगा जब तक कि बॉडी को उस टाइप के की जरूरत है. इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर because congestion of the lung is one of the main symptoms of the disease. Heart failure is not the same as cardiac arrest when the heart stops beating or heart attack when the heart muscle is suddenly damaged by the inadequate blood supply. Heart attack, death of part of CO, cardiac arrest, death of zero cardiac pseudo. चैप्टर खत्म. ब्लड वेसल्स खत्म. ब्लड वेसल्स खत्म. बुक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो जाएगा.
Blood is a major component of the blood. ब्लड से ब्लड ब्लड को दो भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और दूसरा सेल। प्लाज्मा 55%, मोस्ट ऑब्टेंट सेल 45%। प्लाज्मा को दो भागों में बांटा गया। प्लाज्मा को दो भागों में बांटा गया, वाटर जो कि मोस्ट ऑब्टेंट 92% और प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8%। और प्लाज्मा प्रोटीन में आएंगे एल्बू एल्बुमिन्स। सेकेंड आएंगे ग्लोबुलिन्स। थर्ड में आएंगे फिब्रोनेजिन। और चौथा में आएंगे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोनोजन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। और एल्बुलिन का काम है मोस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। और ग्लोबुलिन का काम क्या है? ग्लोबुलिन को भी तीन भागों में बांट दिया गया, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का काम होता है एंटीबॉडी बनाना, मेक एंटीबॉडी। और अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का काम है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड, यानी कि ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंस। एग्जाम्पल फेरी फेरी फेरिटिन ट्रांसपोर्ट आयरन इन ब्लड। प्लाज्मा कंप्लीट सेल को तीन भागों में बांट दिया गया है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स। और आरबीसी क्या है? आरबीसी इज रेड ब्लड कॉर्पल्स और यूथ्रोसाइट्स। नो न्यूक्लियस, आरबीसी में नो न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होंगे। नो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होंगे। एवरेज साइज 8.5 माइक्रोमीटर और बायोकॉनकेव इन शेप। आरबीसी कैसा होंगे? बायोकॉनकेव इन शेप होंगे। आरबीसी कैसे होंगे? बायोकॉनकेव इन शेप होंगे। नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, एवरेज साइज 8.5 माइक्रोमीटर। अरे एक भी नहीं देता यार, नो वन वॉचिंग मी। बाय। टकला। Absence of nucleus gives me or space to hemoglobin. Number males 5 to 5 million per mm³ of blood. Females 4 5 mm³ of blood. Infants 6 to 6.5 million mm³ of blood. बैटरी भी कम है, 11% बैटरी है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी ह्यूमन 120 दिन, फ्रॉग 100 days, infant 90 to 60 to 90 days. फ्रॉग आरबीसी बायोकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। हेमोग्लोबिन की बात करें तो 12 से 16 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। मेल्स में 15 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। फीमेल में 12 से 12.5 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। हेमोग्लोबिन हो गया। डब्ल्यूबीसी लेस यूजन आरबीसी एनीमिया, यदि आरबीसी कम हुआ तो एनीमिया हो सकता है। मोर हुआ तो पोलोसाइथेमिया हो सकता है। स्प्लीन हुआ तो ग्रेवियार्ड और आरबीसी प्लस और ब्लड बैंक ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी हुआ तो ग्रेनुलोसाइट्स हो सकता है और ग्रेनुलोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, नेट्रोफिल्स। नेट्रोफिल्स आर द मोस्ट abundant. Neutrophils are the most abundant. Neutrophils are the most abundant. Basophils 0.5 to 1 micrometer, 0.5 to 1 micrometer. Eosinophils or xenophils
2 से 3%, monocyte 6 से 8%, lymphocyte 20 to 25%, T cell beta. First, acidophils, they can be stained with acidic diacetylene acions while lobed nucleus. Participate in allergic reaction, increase their number. Dissolve blood clot. Basophils can be stained with basic dyes like methionine blue secretion, serotonin histamine heparin, 3 से 5 biolobe. Neutrophils phagocytosis, most abundant, kidney, bean shaped. मोनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस मोनोसाइटोसिस कैसा है फैगोसाइटोसिस है मोनोसाइटोसिस कैसा है फैगोसाइटोसिस टकला it's originate in bone marrow but nature in thymus beta cell originate in bone marrow and mature in bone marrow when monocyte enter the tissue through dipeptidase they are called macrophage lymphocyte T cell produce cell mediate immunity beta cell produce antibody hormonal immunity. Welcome to the chat. No one can watching me. Wow. शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे